पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्यात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विघातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्रद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु कालेषु च सत्सु तमस्त आसीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिराजति विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमना समावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं सुमङ्गसङ्गा गुणया सुसादः चरन्त्यलोकाव्रतमव्रनं वने भूतात्मसुरदः समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान् अनुकालयति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने विरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चितः नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टै सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायात् अद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महात्मभाय नमो प्रवर्गाय परायणाय निच्छन्नचिदुष्पपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मोक्षाय भूरिकरुणाय मूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत भगवते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त्यैष्टान् गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरत्यपि देहमव्ययम् करोतु मे अभद्रयो विमोचनम्
तिनो यस्य न कश्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्पन्ना अत्यद्भुतं त्वच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकं योगमव्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो वेदा लोकाश्च नामरूपविभेदेन फल्या च कलया चिशुमे सवितुर्गभस्तयोर्नियन्ति संयन्तसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्नखानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यैश्च न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुम् नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जगतादशेष जिजीविषेणामिमामुकाकीम् अनन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजां विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्. So I think we have completed this one. 26. We'll check 27 today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तुलसी माल इनको थोड़ा इधर करो ना, थोड़ा बैक को, दिस साइड ना ना उतना नहीं, इधर इधर ऑल्टर के आगे. 27. योगारंधित कर्मणो. Please repeat. हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति. है प्रपश्यन्ति है ना. योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्. योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्. योगारंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्. Translation purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. I offer my respectful obeisances unto the Supreme, the Super Soul, the Master of the All Mystic Yoga.
who is seen in the core of the heart by perfect mystics when they are completely purified and freed from the reactions of the fruity activity by practicing Bhakti Yoga. Purport. The king of the elephants, Gajendra, simply accepted that there must be someone who has created this cosmic manifestation and has supplied its ingredients. This should be admitted by everyone, even the most determined atheist. Why then do the non devotees and atheists not admit this? The reason is that they are polluted by the reactions of their fruitive activities. One must be freed from all the dirt accumulated within the heart due to the fruitive activities performed one after the another. One must wash off this dirt by practicing Bhakti Yoga. Yoga Randhita Karmanah. As long as one is covered by the material nature's mode of ignorance and passion, there is no possibility of understanding the Supreme Lord. Tada rajastamo bhava kamalobha dayaschaye. When one is freed from the modes of ignorance and passion, one becomes freed from the lowest qualities, kama and lobha, lust and greed. Nowadays, there are so many yoga schools to encourage people in developing their lusty desires and greed through the practice of yoga. People are therefore very much fond of so-called yoga practices. The actual practice of yoga, however, is described here as authoritatively stated in the Srimad Bhagavatam. Dhyanavastita tadgatir manasa pashyantiyam yoginoho. A yogi is one who always meditates on the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in the Brahma Samhita. प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य पुनःस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. I worship Govinda, the primeval Lord who is Sham Sundar, Krishna himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in their hearts of the heart with the eyes of devotion tinged with the salve of love. The Bhakti Yogi constantly sees Sham Sundar, beautiful Lord Krishna, with his blackish bodily hue. Because the king of the elephants, Gajendra, thought himself an ordinary animal, he thought himself unfit to see the Lord. In his humility, he thought that he could not practice yoga. In other words, how can those who are like animals in the bodily concept of life and who have no purity of the consciousness practice yoga? In the present day, people who have no control over their senses, who have no understanding of the philosophy, and who do not follow religious principles or rules and regulations are nonetheless pretending to be yogis. This is the greatest anomaly in the practice of mystic yoga. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः. ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नामिने गोरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Is it online? Aman Prabhu is Prashant Prabhu, na? Second one? Saurabh Prabhu. And what is that purple? Ajay Reddy Prabhu. This one? SS. Sahil Saini from satellite. And that brown? अच्छा मानवी माता जी. Somebody is not in the screen. ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? Hare Krishna. So welcome Aman Prabhu, Manvi Mataji, Saurabh Prabhu, Sahil Prabhu. You are near also, you are far also. Simultaneously. You are representing Krishna. Ajay Reddy Prabhu. Thank you for joining. Hare Krishna. So this is one of the very beautiful purports of Prabhupada, where he describes what, how we can understand or go near to Krishna. It's a very simple formula. And then in the first paragraph of the purport, he describes what is that which makes us go near to Krishna and understand Krishna. What is the difficulty in understanding Krishna? Krishna is very simple, and to the simple people he is most easily available or connected. And the whole process of bhakti yoga is to become simple as possible. Of course, it's not as simple as possible, it should become simple only. But somehow we cannot easily become simple. So we have to try our best to become as simple as possible. Actually, becoming simple is very simple, but somehow in the modern time it has become even more complex. It was simple in the times when it was the ancient time, but now it is even more complex because everybody judges us based upon our material qualification. That's why we cannot become simple. We consider that I should also have the same qualification which others have to have. Or if I don't have, then then at least I have to show that I have that. This is the problem, and this is exactly the complexity. Krishna is extremely simple. Why Krishna is simple? Bhagavatam describes how Krishna is simple. He is a supreme Lord, right? If somebody has a power, how proud he will be, right? So much proud. Little power somebody gets, they become proud. Krishna has absolute power. Absolute power in the sense that somebody is a prime minister who has absolute power in the country. That is for 5 years. After 5 years, he also doesn't know whether his power will continue or not. But that's not the case with Krishna, right? He is not going to be elected and he doesn't have to fear that whether I'll be elected next time. पार्टी को जमा करके रखता हूँ खिलाता हूँ पिलाता हूँ. This is not with Krishna. Krishna is absolute power.
There's no chance of somebody dethroning him and sitting absolute power, but at the same time so humble. When Rajasuya Yajna was performed by Yudhishthir Maharaj, so they distributed the services to so many people. Just like in our program, we have distribution of service. आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो. जैसे हमारे पवन प्रभु रोज ब्रेकफास्ट का सारा हरे कृष्णा अरेंजमेंट करते हैं. So that the services were allotted to the people. And what was the service given to Krishna? Krishna took it voluntarily. हाँ, washing plates. There was no plate. There, हाँ, pattal. Devotees used to sit. Now we have buffet serving. This is not very appreciated, I think. The serving is you make the person sit. Don't tell him to roam around. Plate leke, hai, ye do, ye do, ye do. That's not a service. That's not an ideal system. Our style of service was make the person sit down, wash his hand, put the plate, wash that plate. I don't know how many of you have washed that plate. You sprinkle the water on the plate, and spread that, and just put, because we are sitting on the earth only, dirt only. You have this floor. Then you have to worry what to do with this water, right? In Gokuldham when I was there, we had taken every year we go. This year also will go. So see, they sit on the mud. Mud means earth, dry earth. तो आप पानी लो, ऐसा झटको. एंड देन ही वाज टेलिंग मी द ग्लोरी. बोले आपके घर में ये वाले घर में फ्लोर वाले तेल गिरेगा, आपको अभी सोचना पड़ेगा इसको निकालूं कैसे मैं. आपका एक डब्बा 1 किलो भर तेल नीचे गिर गया, इट्स डिफिकल्ट टू टेक इट आउट. सो डिफिकल्ट. जिन्होंने गिराया और उठाया उनको पता है, जिन्होंने दिया है उसको बताया, दिमाग खराब हो जाता है. आता ही नहीं हो और थोड़ा भी रह गया ना, then you are at a risk now. Somebody will put the leg on and zoom, और इधर गिर रहा है ना, सीधा हॉस्पिटल ही, दूसरा बीच वाला कुछ नहीं रहता. और surely. But he said we are sitting on the dirt. If 1 liter oil just falls like this by mistake, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हम वो दिखते भी नहीं उधर, वो चला जाता है अंदर और एज इट इज नॉर्मल, और फिसलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. So this is simple. The devotees used to sit down, you put the plate, wash the hand, and then serve. They don't have to go around taking the plate. ये दो वो दो. And then after they eat everything, everybody, guests should not wash their plate. We make them guests wash our plate here. We are very far from the ideal standards. इतना ही करते तो हमको लगता है कितना सेवा कर रहा हूँ मैं. Actually speaking, they should throw the plate here, wash and hand and go, and then we should wash the plate. The day when that will happen, then Krishna will see Krishna in front of you. Because you are not doing that. So he's also far. हाँ ठीक है तुम उधर मैं इधर, like that. Actually, wash the plate and then give them mukwas, give them gift, and then they go, and then you wind up the everything. This is actually the serving means. Yesterday we went at Mataji's home for taking prasadam. आप लोग नहीं थे, right? No, not allowing anybody to wash the plate. No question of washing the plate. We wash the plate. Well, the host should wash the plate. So that every department of the service was given to everybody, but Krishna was given the service of, Krishna took the service of removing all the plates. जितने भी पंक्ति बोलते जो line, the lines will sit, and when the people will leave the plate, Krishna will leave that plate. No, it's not very glorious service, and it's not fitting to Krishna also. And somebody of his stature will not be able to do it. आपके घर पे चीफ मिनिस्टर आया, तो आपके फंक्शन में चीफ मिनिस्टर को बोलो तुम उठाओ ये प्लेट उठा के डस्टबिन में डालो. अभी वो ड्रामा भी नहीं कर सकता है वो. आई विल टेल यू दिस इज व्हाट, मतलब आई एम सेइंग
It was purely the simplicity of Krishna, it was not pretension. How? Because even a big person will not go so down and do the service. थोड़ा बहुत इधर उधर एक झाड़ लगाएगा, थोड़ा मिट्टी डालेगा, इतना ठीक है। जूठा प्लेट उठाना, उसको वॉश करना, ये नहीं होगा उनसे। ड्रामा भी नहीं होगा। ड्रामा करना है ना, ड्रामा करते हैं कभी कभी, मतलब ड्रामा ही करते हैं एक्चुअली। झाड़ लगाओ, है कि नहीं, वर्कर लोगों के साथ खाओ, झोपड़पट्टी में जाके खाओ। खाने का ठीक है, उसको प्लेट धोने को बोलो। खाना तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो फोटो निकालने के लिए खाना है। That's why if you do the very critical analysis also, then also it is very clear that this cannot be done by somebody who is extraordinarily powerful. This is not possible. Even drama is also not possible. But Krishna did everything and doesn't have the difficulty to do it. मैं कैसे करूँ, लोग क्या कहेंगे, like that. He's not worried about all this. This is simplicity. What's the problem? Yudhishthir Maharaj is my friend in his home. Rajsuyajna is happening, and I am his friend. I need to do some service to him. I need to assist him there. आप अगर किसी के दोस्त हो तो उसका उसका घर के जो उत्सव चल रहा है उसमें टेंशन बढ़ाओगे कम करोगे? दोस्त तो क्या है, मैं रूम को ठीक नहीं दिया है मेरे को, और खाने को ठीक नहीं दिया, अरे फिर काय को आए, जाओ ना यार, दोस्त मदद करने आए ना, तो reduce the tension ना, you increase the tension. How come you increase the tension? You reduce the tension. So that he took the most menial part and he did it. That's how, that much simple is Krishna, and a devotee also has to become that much simple. Then the match will be complete. I am complex, Krishna is simple, फिर जमेगा नहीं. No, the wife is क्या बोलते हैं उसको, राजसिक, and the husband is what है, goodness, क्या बोलते हैं, सत्वयुग ना, अरे सब काम से तो उल्टा हो गया, सत्वगुणी, एंड देन शी इज राजसिक, नहीं जमेगा, ये भी नहीं जमेगा, हंगामा चलेगा कंटिन्यूअसली। द नेचर, हम भी क्या करते हैं, हम क्लास में घुसते हैं ना, कौन से टेबल पे जाके बैठते हैं, हमारे जैसे जो लोग दोस्त है उधर जाके बैठ, आप किधर भी जाके नहीं बैठते भाई इधर उधर। It's a simple thing. If Krishna is simple, if the devotee becomes simple, then the match will be perfect. If Krishna is simple and I am complex, that will not work. So Krishna is not going to be complex. Krishna is very simple. Already he is very simple, right? What is complex in him? What he wants, he has described. How his devotee should be there, he has described. He has described everything. He has not kept any secret. कुछ secret रखा है क्या? कुछ नहीं रखा है. Right? His love affair is also public. Everybody knows it. Right? It's so simple. People's love affairs are hidden. बंद करके रखा है लोगों ने आपने. माँ बाप को भी पता नहीं चलने देते, किसी को पता नहीं चलने देते. एक दिन भाम करके कुकर का डब्बा फूट जाता है, फिर सारी दुनिया बूम मारते हैं जोर जोर से, क्या हो रहा है? राइट, लाइक दैट. लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, उस दिन समझ में आता है, अरे बाद में बोलते 2 साल से चल रहा है तुमको पता नहीं, बोल, like that. His affair is not, her whole world knows, and like that. So he's a simple personality, and he also Yesham to Antagatam. Prabhupada quotes this, the first part of the purport. Prabhupada highlights that only. If you are expecting that we should go near to Krishna, we should reach to Krishna, will achieve the Krishna in our life, then you have to pay the price of that, of becoming extraordinarily simple. Rather, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has very clearly described the first qualification of a devotee is the simplicity. पहला है, पहला, लास्ट नहीं है, पहला यहाँ से भक्ति चालू होती है. And somebody becomes extremely simple. There is no need of becoming complex. If Krishna can be simple, why we need to be complex? Such a great personality, such absolute personality, absolute power, absolute decision, no challenge anywhere. Millions of asuras have come and they were extraordinarily powerful, and Krishna is just Tanu Bringam. He has not defeated Hiranyakashipu with great efforts.
he destroyed he destroyed Hiranyakashipu as if somebody, वो बोलते हैं कि बच्चे अगर उसके हाथ में कमल का फूल दो, वो तोड़ने के लिए उसको मेहनत नहीं लगता है, ऐसे फाट 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 खराब कर देगा 2 मिनट के अंदर। कमल का फूल बहुत टेंडर होता है, वेरी टेंडर। दिस हाउ ही डिस्ट्रॉयड हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावणा, फाइटिंग के लिए फाइटिंग, अदरवाइज ही कैन डिस्ट्रॉय रावण ऑल्सो विद इन नो टाइम। फिर हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे राम रावण वॉर, इतना 7 दिन क्या चला, उधर बैठ के कुछ तो माल चाहिए ना बात करने के लिए, इसलिए इतना दिन चल रहा है, नहीं तो 2 मिनट का काम है, भू कर वो खत्म सब कुछ, सारी लंका खत्म, सब खत्म। बट देन व्हाट यू विल डिस्क्राइब हियर, इंद्रजीत डिड दैट एंड प्रसेन दिस एंड दैट, इतने सारे भयंकर भयंकर लोग, वो रोज का डिस्क्रिप्शन है वहां पे, 18 दिन चला है, 8 दिन चला है, 8 दिन शायद। सो रोज का डिस्क्रिप्शन क्या हुआ क्या हुआ, then we will be also able to understand. So he is very simple. Yesham tu antagatam papam. Why the people are not able to understand? It's so simple. And the reason is given in the first paragraph. Why they are not able to understand? They are involved in so many known and unknown sinful activities. That's the reason even such a simple thing becomes very difficult to understand. The brain is polluted by inappropriate desires. We are not supposed to be desireless, but we are supposed to be free from inappropriate desires. Sin is that. And Prabhupada writes it. Yeah. The best of the yoga schools now, they propagate increase of the material desires. Yoga is supposed to decrease and nullify the material desires. On the contrary, the yoga clubs will increase the material desires. Yoga for better sex. Arey kya hai ye? What is this? How can you propose this? Yoga, and there is no connection of both the things, right? Yoga for better health, yoga for this, yoga for that. Yoga is not for this. So Prabhupada writes it very clearly. Why there is a, if I become simple, Krishna is easily approachable. If I am complex, extraordinary complex, when somebody chants Hare Krishna, when sits and chants Hare Krishna, he should experience the pleasure. This pleasure is this pleasure is a pleasure of the heart, pleasure of the mind, pleasure of the soul can be experienced. आप गुलाब जामुन खाते हो तो आपके सोल को कुछ प्लेजर नहीं मिलता, आपके शरीर को प्लेजर मिलता, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा टाइम तक। मगर हम जब हरे कृष्णा जब करते हैं, क्या हमको आनंद होता है क्या? इफ आई हैव टू चेक वेदर my heart is becoming simpler or not, then there is a very simple test. You take bead bag in your hand. Are you becoming happy to perform the activity following it? That's a test. Am I happy? इतना अच्छा जब करने को मिल रहा है मैं. That's a pleasure on the. And only simple people will derive that pleasure. All the complex, you do all nonsense today and take mala tomorrow. No, it will not move only. नहीं हिलेगा. ऑटोमेटिक प्रोसेस है ही नहीं. दिस इज नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट मेरे को 16 नहीं घूमेगा. वो क्या बोलते हो, मशीन वाला प्रोसेस नहीं. आरपीएम सेट करो, 2 घंटे में 16 घूम, यू सेट द आरपीएम इन द मशीन, फिर वो बराबर उसी फ्रिक्वेंसी से घूमता है वो आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट. तो हमारा क्या है, 1 रिवोल्यूशन पर 8 मिनट्स. 8 मिनट्स आरपीएम है हमारा, है कि नहीं? नहीं होगा. ट्राई मार के देखो, 2-4 लोगों से झगड़ा करो कल, मतलब करो मत. आई एम जस्ट टेलिंग यू, if there is a difficulty, no, not possible. The whole process of Krishna consciousness is centered around becoming as, because we cannot become extraordinarily simple or just simple. That's why this phrase is, as a concession, is presented as simple as possible. There is no need of pretending something. There is no need of showing something. There is no need of doing something just for the sake of doing. No, we are not chanting Hare Krishna to show somebody. We are not dancing in front of Krishna to show somebody. We are
We are doing just this is a duty. He is a master and servant. What servant has to do? Servant has to roam around and make the master pleased. यहाँ पे एक महाराज आए थे. There is Rashambhu quote that very many time, and he is a prolific writer. आज तक 200-400 पुस्तक 15 150 पुस्तक 60 पुस्तक कंप्लीट किया उन्होंने लिख लिख के. 2 मिनट मिलता है ना, 2 मिनट मिलता है उसमें भी वो लिखना चालू कर देते. और उनके साथ 2 सर्वेंट आए. तो वो सर्वेंट अभी उसको अभी इतने बिजी महाराज है, ये सर्वेंट क्या करेंगे, वो क्या काम है, कोई काम तो है नहीं. उनको पूछा हमने क्या करते हैं यार. बोले हम दोनों जोकर है महाराज. वो इतना लिख लिख के परेशान हो जाते हैं. कभी ऐसे आराम से बैठते हैं तो फिर हम लोग कुछ तो सुनाते हैं उनको, बताते हैं, कुछ जोक बताते हैं. वी आर एंटरटेनर्स, बेसिकली वी आर एंटरटेनर्स फॉर दिस महाराज. हमारा कोई रोल नहीं है. वो बिजी रहते हैं अपनी राइटिंग में. हमको जब टाइम मिलता है तो हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं. So this is actually the relationship of the God and us. We are his entertainers and he is the master. This is how it goes. Then the life will be very happy and successful and very simple. So when we try to take his position of becoming master, controller, ye, wo, and so many unwanted desires and tendencies prop in our heart. So that's why Prabhupada writes in the first part of the purport why atheists and any other people are not able to understand such a simple truth. And then he describes this is just because they are involved indirectly or indirectly, secretly or openly into the sinful activities or inappropriate activities. Lust is not appreciated publicly or inappropriately. One should marry, one should have love affair. If he has love, he has to love his wife rather than loving here and there. Legitimate love. This is legitimate love. But you love today, love tomorrow other person. This is very dangerous. This is not appreciated. And greed. We are supposed to work and earn money. But all forms of satta is a greed. I am not going to work anything and I am going to get enormous money. कौन सा घोड़ा पहले आएगा. अरे ऐसे कैसे आप बता सकते हो. This is gambling. Gambling is where you don't know the result. If you go 30 days to the company, you know the result ना, कितना पैसा मिलेगा पता है ना आपको, है कि नहीं. ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कितना पैसा मिलेगा. एक छुट्टी लिया तो कितना मिलेगा, पेड लीव होगा तो क्या मिलेगा, हेल्थ कौन सा कैजुअल लीव होगा तो क्या मिलेगा, अनपेड लीव होता है. सब हंगामा चलता रहता है. आपको पता है क्या होने वाला है. अब घोड़े दौड़ते हैं, कोई बैट बॉल डाल रहा है, अभी वो लोग लगाते हैं 1 लाख रुपए. इस बॉल पे 4 चौका गया तो 1 लाख रुपए, और गया गया नहीं तो उसको 1 लाख रुपए चला गया. और मिलने वाला क्या बोलता है, देखो मेरे को 1 लाख मिल गया. व्हाट इज दिस. आपने उसके लिए क्या किया, व्हाट यू डिड फॉर इट. दिस इज ग्रीड. And there one boy in our Nanded city, one boy in one night lost 8 crore rupees. 8 crore. Father and uncles sold all the property of last 25 years earning and gave that 8 crore rupees back because the mafias called them. बोले हमारे पास नहीं है. नहीं है मतलब झूठ नहीं बोल रहे थे वो लोग. उनको देना नहीं था, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, नहीं थे. कोई घर बेच के थोड़ी ना आपको सट्टा लगाते हैं पागल के जैसे, राइट. एंड देखिए he said देंगे नहीं तो मरने के लिए रेडी हो जाओ. आपका 10,000 में काम हो सकता है हमारा. क्या ये गेड़े को भेजना है गोली मारने के लिए, हो जाएगा बाद में जेल में, क्या प्रॉब्लम. 10,000 दे देंगे. 8 करोड़ के एक्सचेंज में आपको 10,000 मिल रहे हैं, स्पेंड करोगे कि नहीं आप. हाँ, आराम से स्पेंड करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार. भेजो किसी को गोली मारने के लिए, चुपचाप दे देगा 8, ले लो. This is how it has happened. And because we are devotees, we are not knowing. वहां पे हर बॉल पे दाव लगती है. आज ये जो बॉल चल रही है 5वें ओवर की चौथी बॉल चलती है, क्या होगा, लगाओ. और वो जो 1 मिनट रहता है अभी पीछे दौड़ता है,
वहां से स्टंप तक आता है, बॉल फेंकता है, तब तक 100 करोड़ का धंधा हो जाता है। और कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को लॉस होता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को लॉस होता है। एक बॉल पे मिल गया, दूसरे बॉल पे आप लगाते हो। अरे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ आपको। हॉरिबल, एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक 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 बंदे पे सट्टा लगता है। आज कितना विकेट लेगा बोलो, और कोई बोलता है 2 विकेट लेगा, जैसे कोई त्रिकालदर्शी है, 2 विकेट लेगा, तुमको क्या पता। अजीब लोग है एकदम, ऐसे ऐसे बातें करते जैसे आपको। और फिर मैच होने के बाद आधे लोग सर को हाथ लेके बैठे हैं, सारी दुनिया नाच रही है उधर, विजय हो गया बोल के, और ये पागल सर पे हाथ लेके रो रहा है, मेरा 2 करोड़ चला गया बोल। आज तुमको किसने बोला था लगाने का हाथ तो? और जिसको मिला है वो मैच गया, वो तेल लगाने, वो अपना खुश है, आपको 5 करोड़ मिल गया बोल। अरे आपने किया क्या उसके लिए, सब उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा। दैट्स व्हाई greed is not appreciated, and once he gets even 10 ball पे, he will lose, and on one ball he will win, and from that onwards he will consider that that winning ball, if not this, the next will come, not this, the next will come, not this, the next will come। ऐसा करते करते कंगाल बन, 5 रुपए भी नहीं रहता घर। दिस गाइज वेर लैंडलॉर्ड्स देयर इन नांदेड़, वो सब बेच बाज के क्या करेंगे आदमी। और ऐसे इमरजेंसी में आपको बेचना है ना, आपको भाव नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को पता है अभी तो बेच को बेचना ही पड़ेगा, तो क्या करूँ, मांगू कम में, क्या प्रॉब्लम है। दिस इज वेरी डेंजरस। आई एम नॉट जस्ट पुटिंग ऑन द बॉल, उसके ऊपर भी आता है वो, मतलब बैटिंग कर रहा है ना, उसके हर बैट पे लगता है, वहाँ इधर उधर खड़े हैं वो ग्राउंड पे, उनके ऊपर लगता है। If the life is filled with like this, with such irresponsibility, then there is no question of a going near to Krishna. The life, mind, heart, intelligence will be filled with all these manipulations। फिर उसको कुछ ढंग का कुछ बताओ तो वो समझ में नहीं आएगा, उसका दिमाग उधर ही चल रहा है। बोले कृष्णा मेरे मेरे को लॉटरी टिकट जिता के दे, वो बताओ, तुम्हारा कृष्ण मेरे काम का है कि नहीं बताओ। ये सब भक्ति भक्ति में वो क्या मिलने वाला, ऊपर से पूछते रहते हैं भक्ति करने का पेट भरता है क्या? अरे पेट भरने के लिए थोड़ा सा काम किया तो बहुत हो गया। लाइक दैट। सो द पॉइंट वेरी इजीली अंडरस्टैंड हियर, if the life is filled with, and there is no end to this, it's not like you don't consider that at one point of time you will end and then you will start bhakti, ऐसा कभी मत समझना, this is not possible। There are hundreds of thousands of people who can sleep all throughout their life. Their children can sleep all throughout their life. Their grandchildren can sleep all throughout their life. Still, they will not be able to spend their money. And still, they are waiting. नहीं स्वामी जी इतना जल्दी क्या है, करेंगे ना आराम से, अब कब आने वाला है वो पता नहीं। Like that. Recently, that one devotee made that reel. कि मैंने just, अरे इतना जल्दी थोड़ी भगवद गीता पढ़ते, बुढ़ापे में पढ़ो। तो क्या करता है, हाथ पग पकड़ता है, वो ग्रैंड पेरेंट्स बैठे उधर जाता है, बोले देखो क्या कर रहे, वो टीवी देख रहे हैं। बोले बुढ़ापे में पढ़ा, ये बूढ़े हो गए पढ़ रहे क्या, देखो पढ़ने का टाइम आज ही है, अभी है। इट्स नॉट टुमारो, इट्स नॉट लेटर, इट्स नॉट ओल्ड एज। दे आर नॉट टेलिंग यू टू रीड होल थ्रू आउट द डे नाइट and don't do anything. Become a responsible man in the society. At the same time, align the desires according to the Shastra. Dharma, Artha, Kama, Moksha. The life should be practiced based upon the principles of Dharma. When your activity, you focus your life on Dharma, then with that Dharma, whatever Artha you get, you accept it. No problem. You do 5 businesses, earn 50 crores. No issues. No problem. And you work simple man and earn that much, that is your capability. It's both are fine. But the activity has to be based upon dharma. You can't sell whiskey and earn money. No. You sell milk. You sell water. No issues.
But you can't sell दारू, you can't sell गांजा. मैं कर्म ही पूजा है, मैं कर्म कर रहा हूँ. अरे दूसरी पूजा करो ना, यही पूजा क्यों करना है आपको? है ऐसी पूजा, कर्म ही पूजा है तो करो. दूसरा कर्म करने के लिए रेडी हो क्या? इतना मैग्नानिमस भयंकर डायलॉग मार रहे हो, कर्म ही पूजा है तो कर्म चेंज करो ना. नहीं, वो नहीं चेंज कर सकता. कर्म ही पूजा है, पूजा कुछ नहीं है. गड़बड़ी है कर्म आपका. दी धर्म should lead to earning the artha, money, and that artha has to be utilized in kama. Yesterday we had that talk there in the temple hall. All desires you fulfill, eating desire, roaming desire, जो आपको इच्छा है, सर्कस देखने मतलब क्या, कुछ देखने जाना है, खाने जाना है, घूमने जाना है, नाचने जाना है, आपके सारे डिजायर धर्म के ऊपर बेस्ड होने चाहिए. Earth should be based upon dharma, the kama, desires has to be based upon dharma, and then the last one, then if somebody travels like this, then he will lead to moksha. But if it does all kinds of gadbad, then moksha is not there, because dharma is not there. Dharma and moksha is the package, like that. So the basis is dharma. When I am enjoying, the desire enjoyment has to be calculated, that it should be dharmic enjoyment. Enjoyment has to be dharmic. Not dharmic enjoyment. You should see devotees watching, eating prasadam. प्रसाद सर्विंग करना है ना, अभी आपको देखो, आप देखोगे वो माता जी से आधा आधा पौना पौना घंटा बात कर रहे थे, कितना अच्छा प्रसाद बना है बोल. Now you fulfilling your desire of eating, but it's purely dharmic way of fulfilling that desire. That has to be understood. The life goes like this, then Krishna is there all the time with you. Will not forget, neither he will not forget. There is one verse in Bhagavad Gita where Krishna is described, Yomam pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati. Beautiful verse. One should study that verse. This is the essence, precise description of a devotee. What is that verse is saying? क्या ना, क्या स्टार्टिंग है? Yomam pashyati sarvatra. That devotee sees me everywhere. And Yomam pashyati sarvam cha mai pashyati. And he sees everything in me. And then the result of this is described. Very beautiful result. Tasyaham na pranashyami sachame na pranashyami. I am not lost. He is not lost to me, and I am not lost to him. I am not lost to him, and he is also not lost to me. Krishna is seeing that devotee everywhere, taking care of that devotee everywhere, and that devotee is also seeing Krishna everywhere. Tasyaham na pranashyami. I am not lost to him. सचमे न प्रणश्यति. मेरे लिए वो भी लॉस्ट नहीं हुआ है. हमको लगता है अरे यार भगवान भूल गए कि कितना पिटाई हो रहा है, राइट. मगर प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया तो उधर भी नहीं लग रहा था कि यार भगवान ने छोड़ दिया है कि मेरे को, राइट. द्रौपदी had such a difficult time. She was not thinking. Sachame na pranashyati. That devotee is not lost to Krishna. Krishna has not sidetracked him, forgot him, not seen him, neglected him. This will not happen. He will not be lost from Krishna, and we will not lose Krishna. And that was Prabhupada writes in the purport here. The yogi sees Krishna everywhere. Everywhere doesn't mean that, of course, Prabhupada writes here, he sees Shyam Sundar Krishna everywhere with bluish form and all. And then he gave two references from the scriptures. बताओ कौन से दो references दिए प्रभुपाद ने? Most famous verses.
एक हाँ परपोट में है ना 2 वर्सेस। हाँ प्रेमांजन चुरित भक्ति, दिस इज ब्रह्म संहिता। यस, प्रेमांजन चुरित भक्ति, वन the person whom we love, we see him everywhere. This is the rule. आप जिसको प्रेम करते हो वो आपको सब तरफ दिखता है कि नहीं? आपको कोई कोई भी नहीं दिखता है क्योंकि आप किसी को भी प्रेम नहीं करते। वेरी सिंपल। जिसको प्रेम है उसको सब तरफ, जिसको प्रेम करता है वो दिखेगा। आप देश के ऊपर भी प्रेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल डायर को इधर मारा है, यूनिवर्सिटी रोड है ना, कौन है पता है? साफेकर बंधु, नाम पता है ना? इधर मारा है। डायर मतलब ब्रिटिश का वो था, बड़ा ऑफिसर था, उसको मारा। क्या मारा पता है? साइकिल रिपेयर करने का ढोंग कर रहे हैं। साफेकर बंधु, बंधु मतलब दो, दो भाई है, एक साइकिल रिपेयर कर रहा है, नाटक कर रहे हैं साइकिल रिपेयर करने का। साइकिल रिपेयर कुछ नहीं कर रहा, उनको पता था ये जगह है उसका रोज जाने का आने। और दूसरा साइकिल ठीक करने के लिए आया उधर, और वो बैठे, ये बोल रहा है अरे जल्दी करो ये करो, बंदूक लेके खड़े हैं दोनों। डायर ढूम करके मार दिया, साइकिल बैठ भाग गए साफेकर बंधु। एंड दिस दे डिड ऑल दिस ड्रामा। नाउ वेयर दे गॉट द आइडिया? कहाँ से आया आइडिया ऐसा करना चाहिए बोल के, है कि नहीं? दे वर प्रिटेंडिंग दैट दे आर ऑर्डिनरी पीपल, दे डोंट हैव एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन। साइकिल रिपेयर करने वाले के पास बंदूक रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। छूटने का प्लान ऑलरेडी रेडी था। So that is a different case that they did not get freed. But another point where there is a प्रेम है तो क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। This is so simple. उनका भगवान की देश के ऊपर प्रेम था, फिर किया उन्होंने उल्टा पुल्टा जो भी करना है। जनरल डायर को मारना मतलब आज ये आपने चीफ मिनिस्टर को उड़ाने के बराबर। दिस इज हाउ इट वाज। दे टुक दैट रिस्क राइट ऑन द स्ट्रीट, इधर बाहर फुटपाथ पे खड़े रह के। बट हाउ दैट थिंग conviction came, that came from the love or on the country. So where वो तो Prabhupada तो, and Prabhupada and our scriptures gives a very simple formula that if the boy loves a girl, he sees the girl everywhere. किधर भी घूमने जाए वो उसको किधर भी उसको वही दिखेगी। नारियल का पानी दिखेगा भी तो उसको लगेगा अरे मैं नारियल का पानी उनको पिला दो समर के कितना अच्छा होता। अभी वो नारियल का और लड़की का कुछ लेना देना नहीं है, एक आध बार पसंद भी नहीं आता होगा, मगर इसका दिमाग वैसे ही चलेगा बिकॉज ही लव्स। So then if somebody loves God, why not see everywhere? It's a natural consequences. And then second verse he describes, what is that? That is also famous verse where he describes वो भागवत कथाकार वाले गाते हैं ना, वो क्या नाम है? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, ध्यानावस्थित, उसका ध्यान लगा हुआ है, सब तरफ उसको भगवान दिखेंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। When we love Krishna, why should not we love Krishna? Very simple. When people ask, Prabhupada was asked, why only Krishna? Prabhupada said, what else? What else? तुम बताओ, why you love Krishna? ठीक है नहीं करेंगे, तुम बताओ, रिप्लेसमेंट दे दो कुछ तो, है क्या तुम्हारे पास? नहीं है तो ले लो हमारा। You don't have it. There is nothing. इतना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ले लो, डालो प्रपोजल आपका, कुछ भी डालो, भगवान के नाम पे, सुप्रीम के नाम पे, एनर्जी के नाम पे, क्रिएटर के नाम पे, जो डालना है डालो, प्रपोजल मारो, और उसका इतना वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस लाके दिला, बाजू वाला चिल्लाएगा नहीं लेऊंगा बोल के। हम तो पूरी दुनिया घूम के आया अभी ऑलरेडी, सब तरफ लोग नाच रहे हरे कृष्णा। रिप्लेस वाला डालो कुछ तो। वाई कृष्णा, वाई नॉट कृष्णा, वाई नॉट कृष्णा, व्हाट एल्स देन? So this is very simple proposition, and but this will happen only when we will become simple. ऐसा इतने से सस्ते में कुछ कर भगवान तो देने नहीं वाले कुछ भी।
Because he is simple, he wants his devotee also to be simple. Should not be complex. As simple as possible, as humble as possible. And then Prabhupada gives at the end of the purport the example of Gajendra. What is the quality of Gajendra he describes here? Hmm? Humility. He said, I am an animal. How can I understand? He is uh, he is writing, describing such wonderful prayers. हमको भी ये प्रेयर पढ़ने भी नहीं आ रहा है, समझना दूर हो गया, उसके ऊपर परपोर्ट देना दूर हो गया। वो इतना अच्छा प्रेयर्स गजेंद्र लिख रहे हैं और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मैं तो एक जानवर हूँ, पशु हूँ, मेरे को क्या भगवान समझ में आएंगे, यू नो। एंड दिस इज व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग, यू डू एवरीथिंग, जस्ट बी हम्बल एट द सेम टाइम। We are doing everything because Krishna has given us intelligence. We are doing everything because the spiritual master has taught us everything. We are doing everything with Prabhupada has set the standard for us. अपने डिवोटी कितने मेहनत करते हैं, हमारे डिवोटीज का एनालिसिस है कि हमारा सारा सेवा होता है ना, हम वॉलंटरीली करते हैं, किसी को पैसा देना ये करना है वो सब नहीं करते, सेवा बोल के सेवा ही करते हैं। और आप नवमी के दिन रात में 12 बजे बिंद्रू जी हमारे इधर बड़े ऑफिसर है अपनी कंपनी में, 40 साल से जॉब में है, तो नेचुरली बड़ा आदमी होगा ना, वो उधर खिचड़ी का बर्तन खींच रहा है, वो भी कितना, रात में 12 बजे। राइट, करेंगे हम लोग, किसी ऑफिसर को बुलाओ, वो तो पहले तो 12 बजे आएगा नहीं, ऊपर से उसको खिचड़ी का बर्तन धोने को बोलो तो आपको फिर अभी तो आप उसकी कंपनी में काम करते हो तो अगले कल आपको पे स्लिप मिलने वाली है 100%। है वैसा उल्टा पुल्टा प्रपोजल मारोगे उसको, but they are cleaning, because in front of Krishna everybody is small, in front of Krishna everybody has to be grateful because we have been given so much. So the same feeling of Gajendra has to be carried out all throughout. I am anyway insignificant, I got some mercy of rendering some beautiful service to Krishna, which is the blessing. Service is privilege. प्रिविलेज, आपको वीआईपी वीआईपी लगा के रखते हैं ना ऊपर, वो जो सबसे आगे वाली लाइन लाइन रहती है, उधर जाके नहीं बैठ सकते हो आप, खाली है तो भी नहीं बैठ सकते, वो बोल नहीं सकते हो ऑर्गेनाइजर को खाली दिख रहा है, खाली दिख रहा है तुम पीछे ही बैठो, वीआईपी सीट पे नहीं बैठ सकते, बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज। तो अभी भी आएगा तो उधर जाके बैठेगा, उसको प्रिविलेज बोलते हैं, कुछ तो स्पेशल होता है। तो सर्विस ऑफ कृष्णा इज प्रिविलेज, इफ यू कंसिडर सर्विस ऑफ कृष्णा इज प्रिविलेज, देन कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। मैं क्यों कर रहा हूँ भगवान बोलते मैं क्यों कृपा दूँ, रहो तुम उधर, है कि। ये तमाम अभी हमारे फोर्थ चैप्टर में अभी वो वर्ष आने वाला है संडे की, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान बोलते तुम जैसा करोगे मैं उसके साथ तुमको ऐसा ही रिस्पॉन्ड करूंगा। जो आपसे रोज झगड़ा करता है उसको आप जाके प्रेम कर दोगे, कुछ आपका मस्त रसगुल्ला मिल गया, आपको 5 रसगुल्ला मिल रहा है, आप किसको जाके दोगे? जो रोज आपके ऊपर चिल्लाता है उसके पास जाके दोगे, दोगी? वो लास्ट में बच्चा उच्चा सब खा पी के सब बच गया, हाँ तो कुछ तो दे दो उसको, ऐसे वाले नंबर में आप उसको दोगे जो रोज आपसे गप्पे मारता है, प्रेम करता है सब, ऐसे वाले को दोगे ना। आपका ये पार्शियलिटी है क्या? इज दिस योर पार्शियलिटी? इज दिस योर पार्शियलिटी और नो? अरे इंजीनियरिंग लॉजिक लगाओ फिर बताओ, इज दिस योर पार्शियलिटी और नो? यस और नो? नो, यस, नो, यस, दोनों मत बोलना। This is not partiality. Now I'll prove this is not partiality. If that other guy who fights with you would have loved with you every time, still you will be keeping them in the last? No, you will not keep. What is keeping him the last is not you, him.
यू आर रेडी टू गिव, इसको दे रहा है तो उसको क्यों नहीं देंगे, देंगे ना, आप क्या प्रॉब्लम, इसको दे रहे हैं ना, उसको भी देंगे. What is keeping you to give him is not you. That's why you are impartial. You are ready to give. That guy is unqualified. That's a problem from their side. That's why you are not giving. In the same fashion, Krishna is already ready to give. Problem is we are complaining every day. कृष्णा बोलते हैं अरे रुको यार ये बात में बहुत डिफिकल्ट आदमी है डील करने के लिए, दूसरा दूसरा रेडी उसको दे देता हूँ, अच्छा काम कर रहा है. He is not partial. What is creating problem is our complaint towards him. मेरे को तो दिया ही नहीं, अरे फिर वो क्यों देंगे, अभी नहीं देंगे, ये कंप्लेन वाला है, राइट. Prabhupada said when he went to America, अभी उनको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वो 40 रुपए ले गए, उनके पास था ही 40 रुपए. वो तो हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं गए कि मैं 40 रुपए जाऊँ गिनीज बुक में लिख के देखो अमेरिका में 40 रुपए जाने वाला पहला आदमी हूँ. 40 रुपए तो 40 रुपए लेके गए. ऐसा नहीं कि सुदामा के पास पोहा, मतलब यार मेरे पास जलेबी नहीं है, नहीं है, नहीं तो नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, तो पोहा लेके गया. ऐसा नहीं कि जलेबी घर पे लक्का खाया पिया मतलब डब्बा पैक करके रखा, पोहा बांध के लेके गया, ऐसा नहीं. होगा बस पोहा ही था लेके गया वो. So like that, there was no pretension from their side. There was no complaint from their side. If you have 40 rupees, take 40 rupees. तो पता देखते हैं उधर जाके क्या होता है, क्या होगा. लास्ट थिंग इज आई विल डाई, तो वो तो लिखा हुआ ही है कि नहीं. व्हाट इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन, यू विल डाई. इससे ज्यादा, इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. ये लास्ट है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. और ठीक है, उधर जाके लास्ट वर्स्ट क्या होगा, मैं मरूंगा, वो तो इधर भी होने वाला. चल चलो फिर this much conviction is essential to get the mercy of God. If you have 1 rupee, 1 rupee. He is not interested in your 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee. He is not interested in everything. He is interested in your bold surrender to him. Nothing else. कुछ नहीं चाहिए उनको, सब है उनके पास, हमारे से जितना आप वो हापुस का बाप है उनके पास. He doesn't want anything. He just want a bold surrender. You don't worry. Why you worry so much? Surrender to him. Then also he is ready. He is always ready. And that's what can be seen in the surrender of Gajendra. Maybe after 1 year of fighting, getting cornered by the life, मरने आया अभी बेचारा, ठीक है, कभी भी सरेंडर चलेगा भगवान को. ऐसा नहीं कि आज ही करो, करना चाहिए आज मगर जरूरी नहीं है कि आज ही करो. यू कैन पोस्टपोन, but the result has to be like this only. He is boldly surrender. He is not worried now. ठीक है, जब मगरमच्छ मेरे को मार दो, जिंदा रखो, कुछ भी नहीं, मेरे को भगवान एक्सेप्ट करो. In this mood, he plucked the flower and offered to the Lord, and Lord saved him. He took the Gajendra on the same Garuda on which he came to save him. So that's why this purport is so amazing. You can read it 10 times. This purport describes that it is us who have blocked that relationship of both of us, not Krishna. When we become simple, humble, then Krishna is everywhere can be seen. He is not lost to that yogi. Okay, we end here. Hare Krishna. So you want to share something, you can share. Gajendra prayed, Lord wanted to come immediately. The speed of Garuda was very less. So Garuda was saying that he catch the Garuda in his arm and then he run fast. Yes. So is that here in Srimad No, no, he's there now. He's there. He's there. He complains, Garuda, you're too slow. He's so eager to save Gajendra. That's why he is. And the Lord is like that only.
what is waiting, that this goes in that description. When we take one step towards Krishna, Krishna takes 1,000 towards steps towards us. But first step is ours. आप एक स्टेप भगवान की तरफ लोगे तो भगवान 1,000 कदम आपकी तरफ लेंगे, मगर मगर कंडीशन, आप बोले यार कौन पहले चलेगा, वो चलेगा कि मैं चलूंगा, आप ले लो एक 1,000 स्टेप पहले, आप ऐसे भगवान को बोलोगे, बोले नहीं तू यार तू आगे आ जा, पहले मैं आगे आऊंगा, मैं तो उसी के लिए खड़ा हूँ, मगर तू तो आ जा थोड़ा सा एक तो स्टेप ले ले. That's how it goes. When Gajendra said, I am not going to fight anymore, खत्म, मैं बचा नहीं सकता हूँ मेरे, भगवान बोले ठीक है मैं अभी बचाऊंगा, चिंता मत करो. That's how it comes. He is always calculative. He's not calculating, but he's very calculative also. तो कर क्या रहे देखते रहते हो, बदमाशी कर रहा है तो बोले ठीक है करते रहो, ऐसा ऐसा दिखते नहीं. You want to share some? Hari bol. Want to share something? Online personalities. You were mentioning this partiality wala word. So I was listening to Radhagovind Maharaj. He was telling in Hindi it is pakshpat. So he was telling this is regarding the Pandavas. So the question was Krishna is doing pakshpat towards the Pandavas. So Maharaj is saying that pakshpat means that it's made of the word pakshpat. No, Subhaji, like a pakshi, he takes, like he protects his children under his wing. So pakshpat. Oh, So in that way, he was telling that why he'll not do it. The children are remaining under his wing, so he will protect them. Na? If they are running away from him, so then how will he protect? So it's yeah, like that. If you're surrendered to Krishna, Guruji, automatically you are under his protection. You are under the protection of his wings. yeah, So in that he was explaining Pakshpat. So I was remembering that. yeah, yeah. Very beautiful. Pakshapat comes from that word. This is the revelation to us. Thank you very much. Pakshapat means under the, and path means below the wings of the babies. Babies below the wings of the bird. It's called Pakshapat. Yeah, and the same in that same context, I think you wanted to share that only. Yes. That if the Pandavas are seeking shelter of Krishna, and he is saying that I am impartial, I will not give surrender, I will not give protection to you. Actually, that is Pakshapat. You are asking, they are seeking the shelter, and Kauravas don't seek the shelter. अभी उनको उनको भगवान नहीं चाहिए, उनको सेना चाहिए, लड़ाई करना है, सब कुछ करना है, और भगवान जाके उनको बचा रहे, और ये बेचारे बोल रहे हैं हमको भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, और उनको नहीं बचा रहे. अभी इसको पक्षपात बोलेंगे ना, उनको उनको जाके मांग नहीं रहे, आप उनके पीछे लगे हो, इसको पक्षपाती नहीं, इसको पागल बोलते हैं, इसे फूल. तो भगवान कैसे हो सकते हैं, अभी उनको जो चाहिए वो दे रहे हैं. वो आपकी थाली पे, आप मेनू के उधर खड़े हो कि काउंटर पे, प्रसादम के काउंटर पे खड़े हो आप, और आगे का आदमी चटनी मांग रहा है, आप उसको रसगुल्ला दे रहे हो, नहीं बोले मैं इम्पार्शियल हूँ, मैं आपको रसगुल्ला ही दूंगा. अरे जो मांग रहे दे दो भैया, आप पक्षपात क्यों कर रहे हो, आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हो, आपको उसको जो मांग रहे हो दे दो, है कि नहीं. नहीं नहीं मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं रसगुल्ला ही दूंगा, आप जो मांग रहे हो उसको दे दो. They are seeking the shelter, you give the shelter. Others don't want the shelter, don't give the shelter. This is ये यथामम प्रपद्यते. You want it, you'll get it. Yeah, very good. That Yes. that is very nicely described. Thank you so much. Thank you, Raji. Thank you. Hare Krishna. So we end here. I think, yeah. So we'll meet you next Saturday with the 27th prayer of Gajendra. Hare Krishna. संतराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समवेत भक्त वृंद की